Hi everyone, and welcome back to the official channel of LegalEdge. Now, before we start with our today's session, just do give me a tech check. Just let me know in the chat box whether I'm audible or not. Audible and visible too. चल. So let's start with our session. Now, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर? तो रिसेंटली हुआ क्या कि राम मंदिर के फंड्स के एम्बेजलमेंट का इशू मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने सुना होगा, एंड यू मस्ट हैव रेड दैट एज वेल, एंड वी हैव कवर्ड दैट इशू इन अ सेपरेट सेशन एज वेल. पॉइंट क्या है, रिसेंटली कल ऑन 29th ऑफ जून अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया. हर स्टेट में, हर शहर में वहां का लोकल बार एसोसिएशन होता है, स्टेट का भी अपना एक बार एसोसिएशन होता है. तो अयोध्या के बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास किया वेरिन दे हैव क्लियरली बॉयकॉटेड टू डिफेंड द 8 अक्यूज्ड इन द राम मंदिर फंड्स एम्बेजलमेंट केस. जिन 8 अक्यूज को पुलिस ने वहां पर पकड़ा है, बार एसोसिएशन ने क्लियरली बॉयकॉट कर दिया है उन 8 लोगों को किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन देने से. एंड द बार एसोसिएशन वेंट वन स्टेप फर्दर देन दिस. बॉयकॉट तो किया ही है, साथ में उस रेजोल्यूशन में ये भी कंडीशन ऐड कर दी गई that if any member of the bar decides to represent these 8 accused in the embezzlement or the funds embezzlement case, इन 8 accused को अगर कोई भी लॉयर इन्हें रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, सो उसके ऊपर बार एसोसिएशन 5 लाख रुपए का फाइन लगाएगा. Now the point is that are these kind of resolutions which are passed by the association, और अयोध्या बार एसोसिएशन का इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जहां पर बॉयकॉट के रेजोल्यूशंस पास किए गए हों, पहले भी पास किए जा चुके हैं. बट द पॉइंट इज, आर दीज रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल? Because when it comes to the Constitution of India under its fundamental rights, see, the right of representation is a fundamental right which is given under Article 22 of the Constitution of India. Yes or no? Article 22 clearly ये चीज प्रोवाइड करता है that any person who is accused of any offense, ठीक है, is having a fundamental right to consult and to be represented by lawyer of his own choice. Article 22 हमें ये fundamental right के फॉर्म में देता है. Then comes Article 14 of the Constitution of India, which talks about right to equality, that is equality before law and equal protection of law. And according to this right, no matter what kind of a crime the person is accused of, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो पर्सन किस क्राइम के लिए अक्यूज्ड है, लॉ विल ट्रीट एवरी सच पर्सन इक्वली. एंड जैसे मेरे पास, इफ आई एम अक्यूज्ड ऑफ एनी क्राइम, आई हैव एन ऑप्शन ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय लॉयर ऑफ माय ओन चॉइस. तो ऐसे ही किसी भी क्राइम के लिए कोई भी पर्सन अक्यूज्ड हो, उसके पास रिप्रेजेंटेशन का ऑप्शन होगा, राइट होगा. We followed the same principle of rule of law or the right to equality when we were prosecuting Ajmal Amir Kasab as well. Yes or no? And then comes Article 39A of the Constitution of India. Which imposes a duty on the center or the state to provide legal representation to the individuals who are unable to represent them through a lawyer of their own choice. कि वो लोग जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से, इफ दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड अ लॉयर, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड लीगल सर्विसेज टू सच एन इंडिविजुअल. एंड जब कॉन्स्टिट्यूशन लीगल रिप्रेजेंटेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाता है, इक्वालिटी इंश्योर करती है कि सबके पास रिप्रेजेंटेशन का राइट होगा. आर्टिकल 39 है, स्टेट के ऊपर ड्यूटी इंपोज करता है टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन. देन हाउ फार दीज रेजोल्यूशंस ऑफ बॉयकॉट, how far these resolution of boycotts are permissible, and that is something which we'll be discussing in our today's session. So recently हुआ क्या है यहाँ पर? So what happened was, on June 29th, the Ayodhya Bar Association announced a complete boycott, forbidding its lawyers from defending the 8 individuals accused of embezzling Ram temple funds. इन 8 लोगों पे एफआईआर फाइल हुई, जिन्हें अरेस्ट किया गया. तो अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि कोई भी इन्हें रिप्रेजेंट नहीं करेगा. एंड अ स्ट्रिक्ट ₹5 लाख फाइन वाज थ्रेटन्ड अगेंस्ट एनी लॉयर हु डेयर्स टू रिप्रेजेंट द अक्यूज्ड. अगर कोई भी लॉयर इनको रिप्रेजेंट करता भी है, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया जाएगा. नाउ द प्राइमरी क्वेश्चन बिकम्स दैट डज अ बार एसोसिएशन हैव द लीगल अथॉरिटी to force its members to abandon the accused?
बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर एलिजिड क्राइम, कि क्या उनका क्राइम है, क्राइम का नेचर क्या है, उस बेसिस पे क्या आप उन्हें बॉयकॉट भी कर सकते हो. Because the constitutional bedrock of defense of an individual, that is, right to fair trial, is considered as part of Article 21 of the Constitution of India. And one of the facets of fair trial is that the person should be given a reasonable opportunity to defend themselves as well. Yes or no? अगर फेयर ट्रायल आर्टिकल 21 का पार्ट रिकग्नाइज किया गया है तो फेयर ट्रायल में उस पर्सन का अपने आप को प्रॉपरली डिफेंड करने का भी ऑप्शन तो होगा. And that is the thing which is ensured through Article 22, Article 14 and Article 39A of the Constitution of India, जो हमने डिस्कस की. Article 22 एक फंडामेंटल राइट बनाता है that no person shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. 14 उस चीज को इक्वालिटी के थ्रू इंश्योर कराता है that everyone have, ठीक है, everyone will have the option to defend themselves. आर्टिकल 39 एक डीपीएसपी स्टेट के ऊपर इंपोज करता है दैट द स्टेट मस्ट इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर जस्टिस इज नॉट डिनाइड ड्यू टू इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज. ऐसी सिचुएशन में क्या ये वैलिड होगा? नाउ व्हेन वी लुक एट एडवोकेट्स एक्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस, एडवोकेट्स एक्ट इज द प्राइमरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन व्हिच गवर्न्स द लीगल प्रोफेशन इन आवर कंट्री. Along with that, in a supplementary manner, the Bar Council of India's guideline becomes equally important over here. जब हम प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में इन दोनों लॉज को देखते हैं ना, सो एन एडवोकेट इज बाउंड टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ इन द कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स एट अ फी कंसिस्टेंट विद हिज स्टैंडिंग एट द बार एंड द नेचर ऑफ द केस. सो द एडवोकेट इज बाउंड टू एक्सेप्ट एनी ब्रीफ. So the point is that a lawyer cannot refuse a brief simply because the client or the crime is despised by the society, provided the client can pay and the lawyer is not otherwise engaged. सिर्फ नेचर ऑफ द क्राइम के बेसिस पे. सी द पॉइंट इज द 8 accused who are or the 8 persons who are accused of embezzling the Ram temple funds, अब क्योंकि मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुई है तो सोसाइटी उस क्राइम को एक अलग नजरिए से देख रही है. द सोसाइटी एक्चुअली डिस्पाइस द नेचर ऑफ द क्राइम, डिस्पाइसेस द नेचर ऑफ द क्राइम. बट द पॉइंट इज क्राइम के नेचर के बेसिस पे लॉयर के पास कोई राइट नहीं आ जाता है कि वो ब्रीफ लेने से मना कर दे. अब इंडिविजुअली अगर लॉयर किसी केस को नहीं लेना चाहता है वो उसकी मर्जी है. क्या एसोसिएशन बैन इंपोज कर सकता है? So the rule is that an advocate can refuse a particular brief in special circumstances such as a personal case-by-case ethical or logistical choice, and this was considered as a legal thing. इंडिविजुअली मैं एज अ लॉयर अगर किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता हूं अपने ओन डिस्क्रिशन में, दैट इज परमिसिबल. बट इफ द बार एसोसिएशन passes a collective resolutions prohibiting the members of the bar for defending anyone via threat of fines or removal of membership, this is considered as a systemic enforced blockade of legal representation and these are illegal and null. और इसको ऐसे रेजोल्यूशन को मैं इलीगल नहीं कह रहा हूं. This was something which was decided by the Supreme Court of India back in the year 2010. The precedent was the case of A.S. Mohammed Rafi versus State of Tamil Nadu. A.S. Mohammed Rafi versus State of Tamil Nadu में क्या हुआ? कोयम्बटूर में 2006 के अराउंड पुलिस और लॉयर्स के बीच में वायलेंट क्लैशेस होते हैं. ठीक है, a violent clash takes place between the police and the lawyers. And lawyers then finally, the local bar prohibited the lawyers from representing the police in the case. पुलिस को रिप्रेजेंट करने से लोकल बार ने मना कर दी. मैटर हाईकोर्ट के पास पहुंचा. हाईकोर्ट ने इस तरीके के रेजोल्यूशन को इनवैलिड माना, अनप्रोफेशनल माना. इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया कि क्या लोकल बार एसोसिएशन इस तरीके से प्रोहिबिशन के ऑर्डर्स को पास कर सकते हैं, prohibiting their members or the lawyers from representing a person in a given case. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस में कहा that such resolutions are wholly illegal and against all traditions of bar and professional ethics. कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ऐसे रेजोल्यूशन कभी भी वैलिड नहीं होंगे. These are wholly illegal and they are considered as disgrace to the legal community. Those were the words of the Supreme Court of India. That these kind of resolution passed by the bars or the bar bodies, they are wholly kind of a disgrace to the legal community. And the court made it clear that every person, however wicked, depraved, vile, degenerate, perverted, loathsome, vicious or repulsive, वो इंसान चाहे कैसा भी हो, उसने क्राइम चाहे कैसा भी कमिट हो, ठीक है, he may be regarded by the society कि भाई वो इंसान बहुत बुरा है, but still the person has a right to be defended.
And these were the statements of Justices Markandeya Karju and Gyan Sudha Mishra in that case. And they gave a historical reference to the same as well. The historical context was of the year 1792, when there was a famous writer of Britain, Thomas Paine, okay, very famous jurist and a writer. Thomas Paine was actually tried for treason at that point of time. And Thomas Erskine, who was the Attorney General of Prince of Wales at that point of time, decided to defend him in the court of law on the charges of treason. And Thomas Erskine was actually threatened with dismissal if he defended Paine. But Erskine took the brief anyway. क्योंकि Erskine का रीजन सिंपल सा था. क्या रीजन दिया उन्होंने उस ब्रीफ को एक्सेप्ट करते वक्त? He stated that if the advocate refuses to defend from what he may think of the charge or of the defense, अगर एक एडवोकेट किसी केस या किसी ब्रीफ को लेने से मना कर देता, डिफेंड करने से मना कर देता, because of what he thinks about the charge which is imposed on the person or what he thinks about the defense of the person, he assumes the character of the judge. अगर यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हम इस अक्यूज को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि शायद इसने क्राइम कमिट किया है, या हम इस अक्यूज को डिफेंड नहीं करेंगे, इसका डिफेंस हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसका कैरेक्टर हमें अच्छा नहीं दिख रहा है, यू आर अज्यूमिंग द रोल ऑफ द जज. That's not the responsibility of the advocate. And therefore, despite he was threatened with removal or dismissal, he still decided to take the brief of Thomas Paine. Okay? So the point is, Supreme Court explicitly cited this moment to prove that when a bar association boycotts an accused, they bypass the trial entirely, issuing a guilty verdict through the denial of the counsel. कि जब बार एसोसिएशन डिसाइड कर लेता है कि हम इस अक्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो वो एंटायर ट्रायल प्रोसेस के थ्रू इवेंचुअली द गिल्ट ऑफ द पर्सन इज गोइंग टू बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ ना. As long as the allegations are being imposed on a person, the person is presumed innocent until proven guilty in the court of law. But when you decide to refuse the counsel to the person, आप एक तरीके से उसके गिल्ट के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते. And the court stated that ऐसी हमेशा सिचुएशंस रही हैं जहां पर इनडिफेंसिबल लोगों को, जिनको डिफेंस अलाउ नहीं करना चाहिए, उनको भी डिफेंस अलाउ किया गया था. They were also given the opportunity to defend themselves. Like the alleged assassins of Mahatma Gandhi and Indira Gandhi, Nazi war criminals charged with killing millions at the Nuremberg trials. Britishers would have not given the revolutionaries the chance to defend themselves. तो ब्रिटिश रूल था ही हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट, बट वहां पे भी डिफेंस का ऑप्शन था. At the same point of time, Ajmal Amir Kasab, the sole surviving terrorist of the 26/11 terror attack in Mumbai, सबको पता था उसने क्राइम कमिट किया है. Everyone knew that he was part of that terrorist attack. Still, he was given an opportunity or given a lawyer to defend himself. And therefore, the court stated in that case of Tamil Nadu that these kind of resolutions which are passed by the state bar associations or local bar bodies are entirely unconstitutional and null and void. फिर भी हमें ऐसे रेजोल्यूशंस देखने के लिए मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम. 2012 में न्यू दिल्ली में द साकेत कोर्ट लॉयर्स, साकेत कोर्ट वहां पर एक लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, साकेत कोर्ट में लॉयर्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया boycotting the 4 men accused in the December 16th gang rape case, Nirbhaya gang rape case. They passed a resolution that nobody is going to defend them. 2017 Gurugram, Bar Association attempt to obstruct the lawyers defending the accused in the murder of a 7-year-old schoolboy. Bar Association ने intervene किया और lawyers को represent करने से उस person को was accused of killing a 7-year-old schoolboy. Supreme Court को intervene करना पड़ा वहाँ पे. 2019 Hyderabad, the Bar Association refused representation to 4 men who were accused of rape and murder of a 26-year-old doctor. 2020 Karnataka, local bar objected to defending students arrested for sedition. Karnataka High Court eventually ruled it unethical and illegal. So क्या ये रेजोल्यूशन वैलिड है, इनवैलिड है? बट पॉइंट ये है कि क्या लॉयर्स या बार एसोसिएशन के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है? सो उसको लेकर हमारे पास उत्तराखंड कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, हाई कोर्ट का. ठीक है, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इन द 2019 कोर्ट द्वार एडवोकेट मर्डर केस, एक एडवोकेट का मर्डर हुआ वहां पर और रेजोल्यूशन पास कर दिया गया कि नोबडी इज गोइंग टू डिफेंड द अक्यूज्ड. The High Court in this case observed that they will immediately declare such boycott resolutions completely null and void, and the court directed the State Bar Council to initiate severe disciplinary action against the specific office bearers of the offending bar association.
कि भाई जिन लोगों ने ये रेजोल्यूशन ऐसे रेजोल्यूशन पास किए हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक अप्लाई करने की बात वहां पर कोर्ट ने की. सो एनी एडवोकेट who physically interrupts court proceedings or obstructs another lawyer based on these boycotts can face prosecution under section 15 of the Contempt of Court Act 1971. So if it comes to the constitutional validity of these kind of resolutions being passed by the state bar bodies, they are not valid in nature. We can understand that depending upon the nature of the severity of the crime, public outrage hota hai, but the legal system is not supposed to work according to the public outrage. The Constitution of India recognizes, or the Supreme Court have recognized multiple times that right to free and fair trial is a part of Article 21 of the Constitution of India. And therefore, no matter the kind of the crime which the person has committed, the person will always have a right to defend himself as well, because we are a country of rule of law. And therefore, boycotts by Bar Association, while born out of societal outrage over crimes like the Ayodhya embezzlement, fundamentally threaten the democratic architecture they claim to protect. So, are these resolutions valid? The answer would be no. And therefore, the right-minded lawyers should ignore and defy such resolution if they want democracy and rule of law to be upheld in this country. All right. So I hope the topic is clear. This was the entire topic. This was the entire context. Let's say अब आगे क्या होता है. But as of now, the situation as per the judgment of the Supreme Court of India is the resolution which was passed by the Ayodhya Bar Association is not legally permissible. But if the lawyers want to follow it, then that's up to their good conscience. ठीक है. बाकी I hope the things are clear. Rest तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, and we'll meet in the next class, guys. All right. Thank you so much, everyone. Thank you so much.